I've done recording to the cloud. Okay, you have started the recording? Yeah. चलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग वंस अगेन. एंड ये एक फंडामेंटल सेशन है. आई होप आई विल कीप माय लैंग्वेज इन इंग्लिश एंड इन हिंदी, so it is good to everyone. There is no audio. I see message no audio, sir. I can please confirm. Abhimanyu says audible. Yeah, please join again or please unmute your mic because the audio is perfect on my end. Is okay. Okay. Uh, since it is a fundamental session and we're going to be talking about fund flow analysis. I hope every one of you has got a plain paper, a pen, and a calculator with you, and we will see how the intent of the management is from the numbers. So this is Screener. Everybody is pretty familiar with the Screener website. I'll just open a random company, say Vinati Organics, just an example, nothing specific with this company and no recommendation to buy or sell. Okay, so here we have the quarterly numbers. Here we have the quarterly numbers. Here we have the profit and loss, the CAGR, sales growth, profit growth, and all those things. Here we have the balance sheet, and here we have the cash flows and ratios. Fund flow analysis is a very simple way to analyze, and it depends upon the balance sheet to know what the intent of the management is. First, let's go on a simple metric. What fund flow analysis is? See, this is the balance sheet from 2009 till September 2020. And जैसा कि हमको पता है, balance sheet is per as a on a date. It is not a running account. It is a still account as per date, which is, say this is March 31st, 2016, then 31st March 2017, 31st March 2018, and so on. This is my share capital, the number of shares the company has issued. This is my reserves and surplus account, the accumulated profits which the company has gathered over last several years. This is that amount. These are the borrowings from the bank. These are my other liabilities. I can toggle over here and see what are the other liabilities, trade payables, customer advances, and other liabilities. We'll go on the balance sheet and see these liabilities. Okay, this becomes my total liability. Then again, this becomes my fixed assets. Now, fixed assets, there are two components. One is a gross block and one is my accumulated depreciation. Then that becomes my gross block minus my depreciation becomes my net fixed assets. Then comes my capital work in progress. Capital work in progress are those assets which on date of the reporting 31st March 2017 were not completed. So as in these capital assets which are under work in progress will complete, they will be added to my fixed assets account. Then these are the liquid investments which the company is doing. This can be in current liquid investments, mutual funds, or any other subsidiaries. Then the company has other assets, which is inventory, trade receivables, cash equivalents, loans and advances, and other assets. Now, the name is pretty evident, and I don't need to give any explanation what is it. What basically fund flow analysis does is, suppose I am doing a fund flow analysis from 2012 to 2013. Okay, now let me do something over here. See, a liability going up and an asset going up. We have to do simple second grade math over here. A liability going up, that means the company has to pay to the person. Now the share capital, if it's going up, say suppose this is 10 over here. From 10 it goes to 14 over here. So 4 crores of liabilities have gone up. So the company is liable to pay 4 crores. But in a fund flow analysis, we will assume over here is that 4 crores the company has got cash inflows. If you have a pen and paper, please write on a paper. In 2012, suppose my share capital was 10 crores, and in 2013, suppose my 10 share capital was 14 crores. So the difference of 2010 to 2013
not on an absolute number, but on a relative number, is going up by 4 crores. So I get a cash inflow of 4 crores. But यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर the share capital is similar from March till 2012 to 2030. So we will get 0 crores as capital infusion over here. Next comes the reserves and surplus. Over here, the reserves and surplus from 177 has gone up to 231, which is if I subtract 231 minus 177, I get a value of 54 crores over here. Okay. Similarly, the borrowings have gone up from 173 to 237. If I do a 237 minus 173 over here, I get a value of 64 over here. So these this portion is the sources of funds for the company. This portion, this portion. These are the sources of funds. When I do this minus this, I get again 231 minus 177. I get 54 over here as my number. 54 crores. Okay. Again, if I do 237 minus 173, I get a 64 crores number over here. Okay. And in other liabilities, again, it is going up from 45 to 67. 67 minus 45 is 22 crores over here. So the sources of fund, यानी कि कंपनी को पैसा कहाँ से मिला, वो ये चार चार सोर्सेज ऑफ फंड है कंपनी के लिए, जहाँ कंपनी को पैसा मिला. The profits were 54 crores. They added a debt of 64 crores. The other liabilities or trade payables were of 22 crores. If I add all these, so my sources of funds equals to 54 plus 64 plus 22, which is 140 crores. Okay? These are my sources of funds from 2012 to 2030. Now this portion is my application of funds. Okay? Now these applications of funds, now the assets, if they are going up, that means the money is getting consumed. And assets, if they are going down, that means the money is getting released. Again, the same thing over here, from 144 to 290. 290 minus 144. So these numbers will not absolutely match, but we get some significance what the management is trying to do. And over here, 229 minus 196, which is another 33 crores. In CWIP, my assets have gone down from 57 minus 14. So I release 43 over here. I'm not taking the smaller values. That is why my calculations won't match. So 146 plus 33 minus 43 is equal to tentatively 136 crores. Applications of funds equals to 136 crores. And if I do 13 minus 8, which is tentatively 5 crores over here. So ऐसा नहीं है कि we have got a formula and our figure should match, because these might be in points also, and screeners has rounded off this data. So what conclusions we are able to make from this? The conclusions which we are able to make from this small exercise of a second grade math is that my liability going up, I am getting an inflow in my company. Again, the liability going up, I am getting an inflow. My asset going up, the money is getting utilized. So कंपनी कर क्या रही है? कंपनी ने 54 करोड़ का मैनेजमेंट ने प्रॉफिट कमाया, 64 करोड़ उसने बैंक से लिया, 22 करोड़ उसको बिजनेस में might be current liabilities or might be other payables or other things which are running in the business,
So total funds in 2013, he got around 140 crores. Out of that, he has invested mainly in his expansion. Some of the expansion which he was undertaking last year has got completed. The capital work in progress account has gone down, and the other assets which he has kept, something in the bank which he has kept. So the intent of the management is to grow the business, to increase the asset base of the business, to build the new factory. So my sales, my profits in the coming years will go up in a better way. Let's take another example, keeping this same company. Let's come to then what happened from this is 2012 to 2014. Now we come to 2016 or 17, whatever we are here. Again, we see that the company is not diluting. The company is not diluting its stock. So the value here is zero. The value here is zero. Again, can anybody write in the chat box what value should come over here? This is my liability for the company going up. Can anybody please write in the chat box what value should come over here? How 140? Please write. Yes, it is 670 crores minus 530 crores, which is 140 crores of cash inflow. Okay. What value should come over here in this borrowings amount? This is a liability going down. I have paid the liability. पैसा consume हुआ है. यहाँ पे क्या होना चाहिए? No, it will not be minus 38 नहीं होगा सर आपका. हाँ, sorry, minus 38. Correct. What value should be over here? Again, a liability is going up. 35. Okay. So what are my sources of funds? If I do 140 plus 35 minus 38, that means so my sources of fund in this case is 137 crores. 137 crores in this case. So यहाँ पे मेरे को नंबर से क्या स्टोरी समझ में आती है सर? -38 इज 42 माइनस 42 करोड़ का आपका लाइबिलिटी था, उसमें से आपने पे कर दिया. इट शुड नॉट बी 38, इट शुड बी 40 ओवर हियर. दिस शुड बी 40 ओवर हियर. 42 में से मेरा 2 बैलेंस रह गया और मैंने 40 पे कर दिया. तो दिस इज -40 ओवर हियर. ठीक है. थोड़ा सा जल्दबाजी करेंगे तो हम लोग इसमें मिस्टेक करेंगे. अब हमारे को सोर्सेस ऑफ फंड कहाँ मिलते हैं? यहाँ पर 140 करोड़ इज माई प्रॉफिट जो मेरा रिजर्व में चला गया. 40 crores I have paid the borrowing, and 35 crores I have got current liabilities or creditor payment or short-term funds in the business where I don't have to pay any interest cost. So my 140 minus 40 plus 35. So my sources of funds in this case is 135 crores. Now let's see where this money has been utilized. What should come over here? My assets from 382 have gone up to 468 crores in this period. Please write in the chat box. Anybody can write. 86, right? So 86 crores has been invested. So I'll write it minus 86 over here. Again, what has been changed in my CWIP now? From 25 crores, the CWIP has gone down to 7. And asset going down. What should happen over here? Why minus 18? And asset is going down. Asset बेच के पैसा रिलीज हो रहा है. I'm sorry, मैंने पहले वो प्लस माइनस फिगर्स नहीं लगाए. यहाँ एसेट को मैंने बेचा और मेरा पैसा रिलीज हो रहा है. इट इज प्लस 18. Again, my investments. Now I had 3 crores in investments.
Now I have increased the investments to 62 crores. So my asset is going up now over here. So what should come over here? Asset is going up. एसेट के अंदर पैसा खर्च हुआ, कंपनी से पैसा आउटफ्लो हुआ, -59, राइट. सिमिलरली व्हाट शुड कम ओवर हियर? From 278 to 284, what should come over here? Asset is going up. It is utilization of funds. Utilization of funds. Yes, it's -6. Okay. Now, if we add all these figures, 86, let's add the minus figures. 86 plus 59 plus 6. So it's -151. And let's reduce this positive figure. -80. So my sources of funds was 135 crores and my utilization of fund was 133 crores. तो ये सब करने से हमारे को स्टोरी क्या समझ में आती है? ये सब करने से हमारे को स्टोरी क्या समझ में आती है? If somebody can unmute and tell me कि क्या स्टोरी बन रही है ये सब चीजें करने से? The company is making profits. The profits are the tune of 140 crores. They have reduced their borrowings to the bank by the tune of 40 crores. 35 crores is their short-term money in the business. They have invested their profits to grow the business and made addition to their fixed assets, which went up from 382 to 468. Fixed assets, which as on 31st March 2016 was still under production to the tune of 25 crores, is now 7 crores. So assets ban rahe hain. The spare cash which they have put into some investments. That is why the investments from 3 crores went up to 262 crores, and they have not stuck their money in working capital. That's why the other assets from 278 has gone up to 284 crores. ये इमेज मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा आप लोगों को. ये इमेज आई जस्ट शेयर दिस इमेज. Why these assets over here? See, my trade payables have not gone up much and my inventories have not gone up much. So the total difference in my working capital over here was just 6 crores. So अगर मैं शुद्ध हिंदी भाषा में बोलूँ तो कंपनी ने पैसा कमाया, उससे अपना कर्जा उतारा, बचे हुए पैसे से उसने अपनी फैक्ट्री बढ़ाई, अपनी एसेट्स बढ़ाई, अपनी मशीन्स बढ़ाई, और जो उसके सरप्लस फंड बच गया वो उसने इन्वेस्ट कर दिया आगे और रिटर्न बनाने के लिए. ठीक है, आगे चलते हैं इसी कंपनी के अंदर. आगे अभी हमने किया था 2016 and 2017. Let's continue it to see how the management is working. Again, share capital is the same. Company is not diluting. This is 0. Reserves again have gone up. यानी कि company ने profits बनाए हैं. Why we give it a positive figure here? Because the liability has gone up. Company is an individual in the eyes of law. कंपनी को अपने शेयर होल्डर्स को, अपने ओनर को पैसा देना है. The liability has gone up from 670 crores to 786 crores. So what should come over here? A positive figure or a negative figure? Right, positive 116. Again, what should come over here now? The borrowings have gone up from 2 to 15. A positive figure or a negative figure? 13. Right. Again, what should come over here? The current liabilities and the current money in the business has gone up from 139 to 168. What should come up from here? Right. So these are the sources of funds. तो इस साल में कंपनी को कितना पैसा मिला? We'll add these three figures, 116 plus 13 plus 29. This makes it 158, right? Sources of funds is sources. Now what are the applications over here? What has happened here? Can anybody write? What should come over here in the fixed assets?
Fixed assets from 468 is now 457. अभिषेक सर प्लस क्यों आएगा? एसेट कम हुआ है कि बढ़ा है? एसेट कम हुआ है, पैसा रिलीज हुआ है, -11 आएगा. Again, now what should come over here? The CWIP has gone up. Again, the company is doing some expansion over here. Yes, sold assets. That's why -11. आप ऐसा assume कर सकते हैं. Actually, they have not sold. Assets have depreciated. Yes, 28 because asset बढ़ गया है. Company से पैसा outflow हो गया है. So this is -28. What has happened over here? No, no worries, sir. No worry. We are here to learn. From 62, they have gone up to 132. So -70. Okay. Now what has happened over here? From 284, the other assets have gone up to 356. I'll explain to you. From 284 to 356. कितना हो गया? 356 minus 284. 72. Minus 72. So let's add all these minus figures. What is the total of these minus figures? Minus 72. Assets should be positive as money is released. No sir, if money is released, assets will go down. मतलब आप ऐसा मान लो कि मैंने कोई asset बेच के पैसा फ्री किया. 72 plus 70 plus 28 plus 11, which is minus 181. And here we have 786 minus 670, 116, 13, 168, 139, 29 plus 30 plus 116, 158. And this is 11 plus 28 plus 70 plus 72. Now see, यहाँ पर आपका sources and applications of fund is not matching. So this is not wrong कि हमने कोई calculation wrong करा है. In this year, the company generated 158 and company utilized 181. Okay. These explain fixed assets. Sir, fixed assets are assets which you have to run your machinery, your plant, your factory. हम लोग यहाँ पर बेसिक कैलकुलेशन कर रहे हैं कि बिजनेस के अंदर चल क्या रहा है समझने के लिए. And what is the intent of the management? It is because there is no book, no rule to know how the management thinks and what is the intent of the management. So fund flow analysis. Sir, if you can make plus 11 the number, which number plus 11, sir? Sorry, this is not minus. Yeah, right, because money has released. Sorry, my bad. देखो मेरी भी गलती होती है. Numbers would match. Okay, sorry, my mistake. So यहाँ पर क्या हो रहा है कि the business, what they're doing is they are made 116 crores of profit. They have got 13 crores from the debt. 29 crores is the short-term money. 11 crores they got free from their assets because the assets have gone down. 28 crores they are invested in making new assets in the business. 70 crores they have kept as extra investments, and other assets are 72 crores. Now गलती सबसे होती है, तो प्लस माइनस करने पे मैंने भी गलती करी, सबने गलती करी. Now is there a system to automate this and to know the intent of the management? So Senior has an option export to Excel. You can export this. I will just share my screen again because Zoom में थोड़ा issue है. Okay, can you see my screen again? What I have done is I have automated this process from 2011 till 2020, and then this is automatically from screener because the data which I'm getting is from the balance sheet. Data which I'm getting is from the balance sheet. Okay, so this is my calculation over here. See, liabilities going up. गुरजीत सर, मेंबर कह रहे थोड़ा सा आप जूम कर दो इसको.
एक्सेल शीट को। हाँ हाँ ठीक है, ओके। बल्कि के मीडियम में, हाँ परफेक्ट। एक मिनट एक मिनट, अभी ठीक है। मैं यहाँ ये चीज दिखाना चाह रहा था। लाइबिलिटीज गोइंग अप, इट इज एन इनफ्लो ऑफ कैश। लाइबिलिटीज गोइंग डाउन, इट इज एन आउटफ्लो ऑफ कैश। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब क्या मेरा शेयर कैपिटल चेंज हो रहा है? नहीं, शेयर कैपिटल मेरा यहाँ पर चेंज हुआ, तो दिस इज इनफ्लो ऑफ कैश। यहाँ थोड़ा सा चेंज हुआ, अगेन दिस इज नेग्लिजिबल फॉर दिस कंपनी। द रिजर्व, the company has made 43 crores of profit. 95 crores they got from their borrowings. 7 crores is from liabilities. Invested in fixed assets, in current capital work in progress, in some investments. And the other assets, ये जो 88 crores का टोटल है, ये इसका बाइफर्केशन है। Receivables 33, inventory is 8. These 30 crores they are put in the bank, and these are loans and advances to other sister concerned firms or to deferred tax assets. तो क्या हम यहाँ पर देख के एक स्टोरी बना सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या कर रहा है? अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो मैनेजमेंट ने 2 साल तक ही पैसा कमाया, बोरोइंग्स भी ली, और इस बोरोइंग से अपने एसेट्स बढ़ाए। यहाँ पर आते हैं तो कंपनी वेंट प्रॉफिटेबल, सो ही स्टार्टेड टू reduce his borrowings from here. Minus 75, minus 96, minus 20, he started to reduce his borrowings from here. And from here, his profits started to increase. The reserves went up by 43, and the year the reserves went up by 123. And same way, he was putting small enhancements slowly. ऐसा नहीं कि उसने पूरी फैक्ट्री एक साथ लगा ली, थोड़े थोड़े slow as he was earning, he was putting his money into capital assets, and the liquid money, when he was fully capitalized with his assets in the factory, liquid money, he started to keep in small investments which could have earned him more return. And if I see, there was never a time. See, this green figure is now. ये बहुत important. Please don't annotate, sir. Please don't annotate. यहाँ पर क्या था? The receivables, this plus figure is got released. यानी कि जिससे मेरे को पैसा लेना है, उसमें मेरा पैसा अटका नहीं। अजय सर, प्लीज, these are the receivables. Where 33 crores released, 27 crores released, only 114 crores stuck. Here 25 again. That means the company, the management is very prompt in receiving the money from the debtors. Okay. Here again, because of COVID, 42 crores are stuck. Similarly, he has never kept excess inventory on his hand. Again, always he's been able to rotate his inventory. So these are the monies which he is able to release from the inventory. And why cash is minus over here? This is the money which he has put in the bank. Okay. So this thing, I will share this Excel link which is connected to screen. Everybody can do this at a mouse click. Calculations आपको करनी नहीं पड़ेंगी. Now, what does this thing tell me? This tells me that the management is banking on its own profits to grow the business. Initially जब business छोटा था, तो वहां पर borrowing से पैसा वो ले रहा था, लेकिन then he started clearing his, putting down his borrowings down and fund the business from internal generation. ठीक है, let's take another example. Let's take another example, Tata Steel. कोई भी हम एक ईयर पकड़ लेते हैं, and let's try and do the same exercise, and we'll come to know ki what the management of the business is trying to do. I will catch this here. Again the same exercise, second grade math. So what should come here? Can anybody write what should come here? The share capital has gone up, so they have issued more shares. And no, this data is not manipulated as a. This data is passed as per the reported numbers. What value should come over here? From 970, this has gone up to 1165. Okay, positive 195.
positive 195. Now the reserves तो company की accumulated कम आएगी. Okay, what are reserves? Can anybody write in the chat box? What are reserves? What are reserves? Retained earnings, right? My profit, my minus dividend is my retained earnings. So what is this value over here? What is this value should come over here? My reserves have gone up from 34,574 crores to 57,451 crores. It is plus 22877. Okay, good. Now, what should come over here? The debt has also gone up from 83,014 crores to 92,127 crores. Plus figure or minus figure? Okay, 9113. 9113. Okay. What should come over here? Other liabilities. Plus 4110. Very good. तो ये मेरे सोर्सेज ऑफ फंड हो गए. इसका टोटल कितना हो गया? अंकित सर प्लीज टेक, ये बार बार मैसेज आ रहा है, somebody is entering, please take care of that. Yes, yes. What should be the total sources of funds? Can anybody write? It is 36,295 plus or minus? Plus. Okay. Now what comes here? What comes here? The assets from 92 I'm going to put 96 minus 4098. Okay. What comes here? Okay, what comes here? What comes here? Now it's okay, my sound. What comes here? Minus 830. Okay, next one. What comes here? What comes here? From 12,457 to 17,899. Minus 5,442. Minus system hang हो गया. Minus 5432. अरे यार ये तुषार प्लीज सी, I cannot type. Okay, minus 5432. What comes in the next box? What comes here? Minus 5442. What comes here? From 52,200, it is 78,103. What comes here? Minus 25,000. Sorry, I don't know why I cannot type. Okay, आप ये चारों फिगर्स और ये चारों फिगर्स को चेक करो, क्या ये चारों फिगर्स मैच कर रहे हैं? क्या ये फिगर्स मैच कर रहे हैं? I'm not able to type. ये minus 4098, minus 830, minus 5442, minus 25,903. Are these figures matching? Please check that. Can anybody write? Please check. 86,273. Roundabout matching. Okay. So what conclusions we make over here? What are the conclusions we make? The company had made profits of 22,877 crores. Okay. They took up loans of 9,113 crores. 4,000 was their money in the business, which is short-term money. They invested only 4,000 crores in their business, looking at the size of the balance sheet, and they are making only 830 crores for new assets. Investments are gone up by just 5,000 crores.
and the maximum amount of this money is stuck in this other assets, which went up by 52,000 crores to 78,000 crores. अब हम देखते हैं कि अदर एसेट्स है क्या. दिस इज 2018. गो टू 2018. ये अदर एसेट्स हैं क्या. सी दिस. Other assets is they have increment of inventories, and maximum money is they have given a loan and advances to their sister concern firm, और कुछ पैसा उनको ट्रेड रिसीवेबल से भी लेट आ रहा है. अब and some money is there in the bank. Okay, and see these other assets have gone up drastically from 1,000 crores to 16,000 crores. So क्या अब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि if the maximum money is stuck in the working capital in this area, so which firm or which area, which company they have given this loan to? Number one. Secondly, what are these other assets? What are these other assets? ये दोनों चीजें 2018 में ऐसी क्या हुई हैं जिसमें कंपनी को अपने शेयर्स को डाइल्यूट करना पड़ा. डाइल्यूट करके अगर यहाँ पर हम एनुअल रिपोर्ट में जाके ये देख पता कर पाए कि यहाँ पर कुछ हैंकी पैंकी है, तो दैट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग. पब्लिक का पैसा उठा के अपनी सिस्टर कंसर्न फर्म को पैसा दे दिया, एंड दीज अदर एसेट्स इन द ट्यून ऑफ 16,600 crores. लेट्स गो टू द एनुअल रिपोर्ट एंड चेक व्हाट इज द इशू ओवर हियर. 2018 एनुअल रिपोर्ट. Straight away I'll go to the balance sheet. Okay, this is the balance sheet. This is I think standalone है, consolidated नहीं होगा. And this is what we were checking was consolidated. We need to go to the consolidated balance sheet. Yeah. Okay, here is the consolidated balance sheet. हमारे क्या बढ़ा था? Other assets. Other assets over here were this one. From 1,270B, it had increased to 16,000. We need to find this. Other assets. So see where are the other assets. Can anybody point over here? Where are these other assets? Can you see this? From 1,752 crore. No, not that, not that, not that. From 1,752, because screener is clubbing the data. वो नहीं है, वो जो आपने mark किया. From 1,752, this figure has gone up to 20,000. Major change is this. Okay. And other assets have gone down by 3,662 to 255. So अगर हम इसको और इस दोनों डेटा को क्लब करेंगे with this other assets over here, we will get the difference of 16,641, which is this. So what the company has done, company has put retirement benefit assets, which they are called pension liabilities. तो ये पेंशन देने के लिए जो लोग रिटायर हो जाएंगे, नोट नंबर 11. If you go to note number 11 and find out. Other, and the second option was the company has paid loans and advances from 9,614 to 12,000. ये loans and advances इसने किसको दिए? पब्लिक का पैसा है. Cash, trade, receivables, investment, loans and advances. From 300 it went to 700. Can anybody find these loans and advances? क्या फिगर था? From 9,600 crores to 12,000 crores. This balance sheet is in crores. To whom the company has given these loans and advances? Can you find in the balance sheet why that figure has gone up so drastically? Can anybody mark? Please annotate.
That is retirement benefits. That is the other asset which we have just seen. Loans and advances, but this figure is not matching what screener is giving us. स्क्रीनर का डेटा आप देखो और ये वाला फिगर मैच करो. Loans is they have given some loans to loans are not in part of the not visible. नहीं ऐसा नहीं है. Loans are there. See, from 300 crores it is 700 crores. First see the difference. What is the difference over here? What is the difference from 9600 to 12,000? What is the difference over here? पहले इसका डिफरेंस निकालो कि कितना डिफरेंस है. It's like 3164. Okay. So we need to find the difference of 3164. Now, mota mota 717 minus 373. Around 340 crores is over here. Okay. Now, derivative assets, investments, equity, intangibles. Now, equity accounted investments. One figure is here because screener will give you clubbed data. This is 188. Okay. So ऐसे ही करके you have to find where these loans and advances and go to these schedules and read the loans. Now the good part comes. अभी तक हमने simple way में fund flow analysis करना सीखा. Okay. Let's do a proper fund flow analysis now. Proper fund flow analysis would be in a proper balance sheet. Let's take here. What should come here? This is the asset side. What should come here? Now calculate. He's right. वो डिस्कस करेंगे सर. व्हाट इज गुडविल ऑन कंसोलिडेशन? गुडविल इज दे हैव बॉट another company and they have paid more than the book value, so that is why the goodwill account is showing on the balance sheet. Okay, what should come here? The property plant has gone up by 86,880 to 90,322. What should come here? A plus value or a minus value? Now this doing fund flow in the balance sheet will give us more insight. Minus 3442. पॉइंट्स को छोड़ दो, छोटा फिगर मेरे को नहीं लेना है. ओके, नेक्स्ट कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस. इज राइट एवरीवन. कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इज द एसेट्स अंडर कंस्ट्रक्शन. अभी तक बने नहीं है. नाउ वी आर डूइंग अ रियल फंड फ्लो एनालिसिस. -645. वेरी गुड. नेक्स्ट वन, गुडविल ऑन कंसोलिडेशन मींस कंपनी ने कोई दूसरी कंपनी या कोई दूसरा एसेट एक्वायर किया है, so they have paid more than the book value for this acquisition. What value should come here? -605. Okay. Intangible assets are brand names and patents and all those things. What should come here? -51. Okay. Sorry, other tangibles. Intangibles are this from 269 to 254. What should come here? Asset is going up. Utilization of cash. 185. Again, equity investments, some investments they have made. Again, utilization of cash. Cash has gone out from the company. What should come here? -188. Again, investments. Some investments they have reduced. What should come here? No issue, no issue. I'll share the recording with you, Naveen ji. The assets have gone down. They have reduced their investments. +3981. Okay. +3981. They have increased their loan. Now what should come here? This is थोड़ा सा tricky part.
इसको ध्यान से करो। लोन्स, लोन डायबिटीज होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू फ्रॉम 373 टू 717। वाई माइनस, लोन है, लोन तो लाइबिलिटी में आता है ना। इनफ्लो, वाई, हाउ इनफ्लो? पैसा इन नहीं होगा ना, दिस इज लोन, दे हैव नॉट टेकन द लोन, दे हैव गिवन। दे दीजिए, ध्यान से थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। लोन पैसा उन्होंने दिया है, लिया नहीं है। लोन दे हैव गिवन, यस, -344। ओके, ये छोटा है, इसको छोड़ भी सकते हैं। इफ यू वांट टू डू, यू कैन डू। दिस इज डेरिवेटिव एसेट्स, have gone, assets going down, small amount. What should come here? Asset is going down, small value. फटाफट fast, 54 plus 54. Next, all have a calculator and pen. This is 2 crores. I am leaving this value. Not necessary. Show those values. Next, retirement benefits. Retirement benefits. Asset going up. Now, एक माइनस वैल्यू प्लस वैल्यू, प्लीज कंफर्म कौन सा आएगा, माइनस आएगा प्लस आएगा? कितना मैम, प्लीज कंफर्म। राइट, -18,818. Next, income tax assets. लोन बढ़ा है, लोन में कंफ्यूज हो, लोन बढ़ा नहीं है भाई, लोन उन्होंने दिया है, कैश आउटफ्लो है। दे हैव नॉट टेकन लोन, दे हैव गिवन अ लोन बिकॉज इट इज कमिंग इन एसेट। ओके, इनकम टैक्स एसेट्स, राया, ऐसा मान लो, इट्स इनकम टैक्स एसेट्स प्लस और माइनस, हाउ मच? 171, श्योर? आई एम नॉट कैलकुलेटिंग। 171 एंड डिफर्ड एसेट्स, डिफर्ड टैक्स एसेट्स इज राइट, सॉरी, -171. डिफर्ड टैक्स एसेट्स -150. अदर एसेट्स +1084. So this completes our non-current assets. Similarly, we have to do this for the current assets also. And ये करने के बाद we have to do all the plus minus figures, and whatever is left is our utilization of funds. ठीक है? I think the idea is clear now. And this was the balance sheet. Similarly, we go over here. Here we get the sources of funds. जो हमने स्क्रीनर पे किया था या एक्सेल में किया था, दैट वाज अ शॉर्टकट मेथड, और जो हम यहाँ कर रहे हैं, दिस इज अ कंप्लीट थिंग व्हिच वी आर डूइंग, एंड इट टेक्स हार्डली 5 मिनट्स और 10 मिनट्स टू गो फॉर अ बैलेंसिंग। एंड हमारे को ये पता चलता है कि कंपनी पैसा कमा के अपना बिजनेस बढ़ा रही है या बोरोइंग से बढ़ा रही है, बोरोइंग से अपना बिजनेस चला रही है, या जैसे अजय सर टेंशन लेते हैं कि उसकी पेमेंट्स अच्छे नहीं है, पेमेंट्स करा दे। ऐसा तो नहीं कि बोरोइंग लेके अपने कस्टमर्स पे और अपने डेटर क्रेडिटर में पैसा फंसा रही है। The stock price is a secondary issue. This is a fundamental thing what we have to do in a fund flow analysis. It's a very simple one. So, the loan taken by the company comes in borrowings. Yes, the loan taken by the company comes in borrowing, but the loan given by the company to the sister concern comes in financial assets. So I hope the idea is clear. मैंने इसका Excel I will share shortly how you can do it from screener, the shorthand method which we did over here, and this is the complete thing which we are doing on a line by line basis of the balance sheet. So
let's take up questions. Tushar, please allow everyone to unmute and so we can have questions. We can have questions, please. Gurjeev ji, Neeraj here. हाँ जी मेरे जी. Gurjeev ji, the years which you are comparing, like from last year to this year, तो एक पर्टिकुलर कंपनी को एक्सेस करने के लिए हमें कितने साल का उसको पर्टिकुलरली मतलब कंपेयर करना चाहिए? एटलीस्ट आपका जो करंट है ना उसमें से पिछले 3 से 5 साल का करो और स्क्रीनर में करो. अगर आपको बैलेंस शीट में थोड़ा सा टीडीएस टास्क लग रहा है, एटलीस्ट यू नो व्हाट द इंटेंट ऑफ द मैनेजमेंट इज, कि मैनेजमेंट पैसा बिजनेस में लेके कहाँ से आ रही है. इसको करने के लिए आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. वंस आई गिव यू द एक्सेल फाइल फॉर इट, you have to just I can show you what you have to do is you have to go to screener like this and upload the excel. screener में जाके आपको एक टेम्पलेट में दूंगा, आप अपना टेम्पलेट यहाँ जाके अपलोड करेंगे screener.in/excel. इसके बाद open the company of your choice, click export to excel and you will have these numbers. हाँ बोला. खेलने नहीं दे रही. मैं आता हूँ थोड़ी देर में, चाय पी के. You will have these numbers. और ये नंबर से आप इंटरप्रेट कर सकते हैं कि स्टोरी कहाँ जा रही है. ओके, आई थिंक स्क्रीन शेयरिंग दिखा नहीं, सॉरी स्क्रीन शेयरिंग दिखा नहीं. ये मैंने जो एक्सेल डाउनलोड करी थी, एक्सेल डाउनलोड करने के बाद मेरे को ऐसे नंबर्स मिल जाएंगे आपको उसमें. तो यू कैन गेट टू नो वेयर द स्टोरी इज गोइंग, मैनेजमेंट करना क्या चाह रही है. देखो यहाँ पर ये बोरिंग्स बढ़ा के अपना काम कर रहा है. ये यहाँ पर बोरिंग्स, अर्निंग से ज्यादा बोरिंग्स बढ़ रही है. ओके, तो जैसे हमने अभी 2 साल का किया था, वैसे ही 5 साल का एक साथ करना पड़ेगा सेम चीज. ये आपको एक्सेल अपने आप करके देगा. और ये मैंने कॉलम्स बना रखे हैं, ये ग्रीन और ये रेड कर रखा है, इसको एक्सेल अपने आप करके देगा. आपको कुछ करने की जरूरत नहीं. वो हमने एक्सरसाइज इसलिए किया था लॉजिक समझने के लिए. इसमें एक बार आप बताओगे कि लास्ट में फिर से उसको रिकैप करके कि क्या देखेंगे इसमें. ओके, रिकैप. यहाँ पर क्या हुआ है कि 2018 में इसने शेयर्स डाइल्यूट करके पैसा उठाया 174 करोड़, कमाई इसकी थी 22,876 करोड़. बोरोइंग से इसको कैश इनफ्लो हुआ है 9,000 कम करोड़ एंड अदर लायबिलिटी से इतना हुआ है. ओके, he has reduced his assets. मैं हो सकता है इसमें शायद कलर का कुछ कॉम्बिनेशन खराब हो रहा है. दैट कोडिंग आई विल डू. एंड दिस इज मनी फ्रॉम कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस. दिस रेड एंड ग्रीन कोडिंग, दिस इज कंडीशनल फॉर्मेटिंग. आई जस्ट चेक दैट. बेसिकली यहाँ these are the sources and these are the applications of funds. और ये जो लाइन है अदर एसेट्स वाली, ये इस लाइन में 4 पार्ट है. ये 1, 2, 3 और 4 ये चीज है. Yes, anybody can ask question. No need to raise hand. गुरजीव जी, क्या विनीत हियर. एक पूछना था. आई ज्वाइन बिट लेट बट ये जो कंपनी का रिजर्व्स बढ़ रहा है, राइट? सो व्हाट एवर दे आर मेकिंग प्रॉफिट, सो दे आर पुटिंग इनटू रिजर्व. इक्विटी डाइल्यूट कर रहे हैं, दैट मेक्स सेंस, बट दे आर आल्सो सेइंग कि दे आर taking more money towards their profit. वो रिजर्व कर रहे हैं सारा चीज. In this, sir, I'll cut you short. In this company, what I see over here the reserves have gone down by 8,000 crores. Here the reserves have gone down by 9,000 crores. Here the reserves have gone down by 5,000 crores. In no condition, in a safe investment in a business, your reserves should ever go down. Reserves exactly. वही मेरा point था. Exactly. This is what my question to you was कि if I see that every year the reverse reserve जो है fluctuate हो रहा है. Normally it should be protected at constant or either it should go up. तो अगर रिजर्व्स बढ़ रहा है और फाइनली अगर हमारी बोरोइंग हो रही है, सो आई डोंट नो हाउ डू यू रीड दैट कि अगर जैसे आप 18 की पीरियड की बात करोगे तो 22,876 दिख रहा है जहाँ पर रिजर्व्स बढ़ा है, बट एट द सेम टाइम बोरोइंग आल्सो 9,000 करोड़ की हुई है, राइट? सो व्हाई वी आर बोरोइंग, मतलब वी शुड आस्क दिस क्वेश्चन कि बोरोइंग क्यों किया जब ऑलरेडी इतने पास इनके पास कैश आ रहा है, राइट? बोरोइंग करने के बावजूद हमने डाइल्यूशन भी किया है. Right, exactly, yes. तो that should read a red flag ना. तो आपको यहाँ समझ में आ रहा है कि 2018 में कुछ गड़बड़ हुई है. So this is the idea of this exercise. Actually, this should be red over here. ये color coding है. I'll get it checked by Abhimanyu and share the sheet. ये this should be minus figure over here. I'll check why it is coming plus. यहाँ पर क्या है कि अगर इसका रिजर्व बढ़ रहा है और पिछला जो बेस मेरा नेगेटिव था
Why he is taking so much of borrowings and why he is taking? Exactly. अच्छा, no, this money is not 174 crores. ऐसा तो है नहीं कि कोई एट पार आपको आईपीओ में आपको स्टॉक दे देगा. Right. 174 करोड़ का इसने जो दिया है वो कुछ ना कुछ प्रीमियम पे दिया होगा. Mhm. ठीक है, ये जो रिजर्व Right. बढ़ा है ना, now this reserve has got two accounts. One is your profit account and one is your premium account. Just Right. 1 minute. 2017. तो इसमें I'll show you. पाजी एक मिनट सर, Yeah. वो point clear करते हैं. I'll show you. Sorry. See 2017. What is the net profit? minus 4,200. How your reserves are going up by 22,000? Because this 174 crore shares he has issued on premium. So this Okay. premium, Okay, premium cost ले लिया वहाँ पे. Got it. Clear. this premium minus these losses, his answer is 22,000. Got it. Very clear, sir. फेस वैल्यू पे वो वहाँ पे नहीं है, वो प्रीमियम चार्जेस एलोकेट कर रहे हैं. हाँ. और अभी हम क्या कर रहे हैं? We are doing a second grade math over here. We are doing simply plus minus झोल झपाटा देखने के लिए कि मैनेजमेंट करना क्या चाह रहा है. तो ये जो हमारा एग्जांपल था, इससे हमारे को समझ में आया कि धंधे में इसके पास पैसा है ही नहीं, इसको बहुत तो तकलीफ है. अगर सर गुरजीव जी, अगर इसमें एक ट्विस्ट की बात करें, अगेन मे बी आई एम सॉरी अगर मैं रॉन्ग क्वेश्चन पूछूं, तो अगर मैंने इक्विटी डाउलूट किया, राइट, एंड प्रीमियम पे पैसा जमा किया, एंड पैरेलली मैंने बोरोइंग भी कर लिया, राइट, एंड इफ आई डू केपेक्स ऑफ रफली अबाउट लेट्स से 20,000 करोड़ का, then it the story should played out because I'm diluting my equity, borrowing, and then I'm putting a capex. See, if I am diluting my equity, borrowing and putting my capex, then my returns ratios will go down badly, which is not a sensible thing. Rather, I should do capex over 3, 4, 5 years. मेरे पास फैक्ट्री है 100 यूनिट बनाने की, मैं एकदम ही उस फैक्ट्री को 10,000 यूनिट बनाने के लिए उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ा देता हूँ, तो आई मे नॉट बी एबल टू सेल, इतना मार्केटिंग नहीं होगा. But in this case, this guy has not increased, no? He's only increased by 4,000, and all his money is stuck up over here, which is exactly, yeah, makes sense. Which is in working capital. Right. तो मतलब मैंने कस्टमर को माल बेचा, कस्टमर मेरे को पैसा नहीं दे रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है, पैसा लाने के लिए मुझे इक्विटी डाइल्यूट करना है और अपने बोरिंग लेना पड़ रहा है अपना. And this, now see the size of this balance sheet. 4,000 crores is maintenance expenditure for Tata Steel. This is not a growth expenditure. This is a growth expenditure, 28,000. So, भाई इतनी मशीन है, 2 लाख करोड़ का बैलेंस शीट है, तो 4,000 करोड़ तो उसका मेंटेनेंस कॉस्ट है. So this, if we go slow by these numbers and try to understand and look at the balance sheet and look at the annual report for insight, we get to understand कि मैनेजमेंट सोच क्या रहा है. Right. और हमको ये समझ में आ गया कि वो सोच क्या रहा है. then अगर वो चोर है, then stock price and stock charts will not help us. And if he is not sure, he is simply going into some problem and he might come out by the industry or by something, then he will surely create returns for us. So this exercise is just to gauge what the management is thinking, because management का thinking का हमारे को किसी annual report में या किसी जगह भी कुछ नहीं पता चलता until unless we don't go and meet the management and ask them tough question. Right. And we being a retail shareholders of having few shares, why will the management meet us? And moreover, sir, ये भी जो balance sheet है, it is not transparent. It is all managed, So if they are managing, we are seeing this figure. पता नहीं इसके अंदर कितनी जुल हुई होगी. नहीं, if they are नहीं, वो सब पकड़ में आती है सर. अगर उसमें they are doing some mistake, उसका पकड़ में आता है. Today we have just doing the fund flow session just to know how the management is thinking. Just close your eyes for 5 minutes and you be the management of Tata Steel and see what problems you are going throughout the business. वो चीज समझ में आएगी. And यहाँ पर देखो ना, see, all the money is getting stuck in inventory, all the money is getting stuck in receivables. ऐसा मिलता ही नहीं है. अब 2 साल तक ये पैसा नहीं मिला, उसके बाद तो मिलेगा ना जबरदस्ती से, लेकिन 2 साल का पेमेंट साइकिल हो गया. Right. And he is giving advances of 8,000 crores to some company, his sister concern company. कर क्या रहा है? लॉसेस आ रहे हैं, कर्जा ले रहा है और किसी और को पैसा दे रहा है. Doesn't make sense. Right. And again, अब चलो हाँ या 10 rupees मैं पूछता हूँ. या so इक्विटी कैपिटल में माइनस, हाँ इक्विटी कैपिटल में माइनस इसलिए आ रहा है. माइनस भी क्यों आ रहा है? 2016 देखते हैं ना, 2016
इसलिए माइनस आ रहा है। ओके, कोई इन्होंने ईसॉप्स राइट ऑफ करे हैं या कुछ करा है, वो आपको इनके रिजर्व इन सरप्लस अकाउंट में या इक्विटी अकाउंट में दिखना पड़ेगा। लेट्स चेक 2015 एंड 2016। 2016 ये रहा। सर स्क्रीन शेयर लेट्स कीजिए। चेक। हाँ, न्यू शेयर कर रहा हूँ, न्यू शेयर कर रहा हूँ। तो अगेन 2016 BALA and sheet। मैं स्टैंड अलोन ही देख लेता हूँ, आप कंसोलिडेटेड स्टैंड अलोन कैसे भी देखेंगे। स्टैंड अलोन में तो नहीं आ रहा, सेम है, कंसोलिडेटेड ही जाना पड़ेगा। नोट नंबर 3, पेज नंबर 238। नोट नंबर 3, 238, 239, पेज नंबर 238। See what has happened. Ordinary shares of 10 rupees fully paid up। इतने शेयर्स ये थे इनके 97,000, ये 97,47,000 इतना पे था, which was 971। This has gone down। कुछ शेयर्स इन्होंने कैंसिल करे हैं या कॉल बैक किए हैं, हेल्ड बाय सब्सिडरी। तो सी एक्सक्लूड्स ऑर्डिनरी शेयर्स हेल्ड बाय सब्सिडरी, इसलिए वो आपको वहां पर माइनस दिख रहा है। Is it a good thing or a bad thing? It's negligible because company of this size it is negligible। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई बायबैक किया, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई बायबैक किया। तो दिस सम कंपनी शेयर्स हो सकता है कि वो सब्सिडी इन्होंने खत्म कर दी हो। तो कुछ शेयर्स सब्सिडी के पास थे, 972 इन्होंने इशू करा रखे हैं, 971 इन्होंने बाजार में दे रखे हैं। तो दिस इट इज टैड बिट टाइनी, नथिंग सिग्निफिकेंट। जैसे विनाती में हमने देखा it was constant like 10 10 10 10 10। हाँ, Right? विनाती में विनाती Is it a good thing to be constant or it's a good thing to be, you know? it is a good thing to be constant and going down, but not this much by a good amount, because when it is going down the company is buying that stock। But what if they are increasing that for the capex? That is good thing or bad thing? No, that is a bad thing। Okay, you just explained because ROI that is a comes bad thing। down। मतलब उसको बैंक पैसा नहीं दे रहा है, दोस्त लोग पैसा नहीं दे रहे हैं, तो वो मार्केट में पैसे उठा रहा है, and which is expensive, which is a bad thing। और and what when they do the buyback जो करते हैं उससे क्या होता है? When they do the buyback is a good thing? See buybacks and all that will cover in the balance sheet। वो क्या होता है क्या नहीं होता, अभी का फोकस सिर्फ ये चीज था, how to go by this। If you see यहाँ पर शेयर कैपिटल was 6200, यहाँ पर 887। This is a good thing or bad thing? It's a bad thing, diluted। No, why it's a bad thing? Why it's a bad thing? No, they have not diluted actually. They have good bought thing. back, sort. No, they have not bought back, they have not diluted। फिर sir, here you see preferential shares, they have redeemed their preferential shares। Preferential shares are something which we give to our preferential shareholders and get extra money। ये सब कवर करेंगे हम बैलेंस शीट में। अभी फोकस इज नॉट दैट, फोकस इज फंड फ्लो एनालिसिस, हाउ टू गेट द फील व्हाट द मैनेजमेंट इज थिंकिंग, द इंटेंट ऑफ द मैनेजमेंट। गुरजीव सर, हरकेश द्विवेदी है। हाँ सर। सर एक बात पूछनी थी कि हम कभी भी किसी कंपनी का अगर एनालिसिस करते हैं तो उसमें जो सबसे मतलब एक नेगेटिव पॉइंट है जो हमको देखना चाहिए कि वो है, मतलब हमको सस्पिशियस होना चाहिए कि वो पॉइंट उसमें है या नहीं है, मीन्स उसमें कुछ जो फ्रॉड सर के एक ऐसा एक पॉइंट नहीं, यहाँ पर कहते हैं ना गाड़ी चलती है उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, पिस्टन होता है, टायर होता है, स्टीयरिंग होता है, हवा, वो सारी चीजें, वो ऐसा कोई फिक्स। एक चीज मार्केट में क्लियर करो, चाहे टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो या फंडामेंटल कर रहे हो, कोई भी फिक्स रूल नहीं होता यहाँ पर। करेक्ट। बहुत सारी मूविंग पार्ट्स हैं, सारे मूविंग पार्ट्स एक साथ चलेंगे तो ही वो गाड़ी आगे बढ़ेगी। ओके, वो धीरे धीरे कवर करेंगे।
Okay. Any questions to fund flow analysis? Yeah, okay. Thank you, sir. जी सर, रत्नदीप है। हाँ जी सर सर। आपने बहुत अच्छे से समझाया, लेकिन सर ये मेरा शायद पहला ही था कि मैं फंडामेंटल एनालिस्ट देख रहा हूँ आज पहली बार कैसे होता है। और मेरा जो बैकग्राउंड है वो भी फाइनेंस का नहीं है, सो अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो समझ में आया, बट उसका वो स्टोरी बनाना, उसका हाउ टू इंटरप्रेट इट, वो हमारे को ना थोड़ा सा स्लो प्रोसेस में खुद को सोचना पड़ेगा। जैसे अभी टाटा स्टील का क्वेश्चन चल रहा था कि उसका रिजर्व बढ़ गया, तो सर विनीत सर ने क्वेश्चन पूछा कि यार उसने अगर प्रॉफिट कमाया तो प्रॉफिट कमाने के बाद उसने अपना फैक्ट्री में मशीन क्यों नहीं लगाई। अगर मान लो मेरी कोई फैक्ट्री है जिसके अंदर मैं कोई प्रोडक्ट बनाता हूँ और पिछले साल मेरे को कुछ प्रॉफिट हुआ, तो वो प्रॉफिट मेरे हाथ में है या मुझे मेरे कस्टमर से पैसा लेना बाकी है। सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे तो। और अगर कस्टमर से पैसा लेना बाकी है और मैं बैंक से उधार लेके अपना मशीन लगा रहा हूँ, तो फिर मेरा बिजनेस किस काम का। ठीक है सर। हाँ सर, तो मतलब ओके, तो थोड़ा मतलब बेसिक बिजनेस का अंडरस्टैंडिंग हो तो मतलब हो सकता, धीरे धीरे पढ़ाई करके समझ में आएगा। बेसिकली क्या है ना सर, आप ये सब समझो कि आप एक कंपनी के मालिक हो, आप ये कंपनी को चला रहे हो। ठीक है, आपने 5 साल मेहनत किया, आपने अपना फैक्ट्री खड़ा किया, उसके अंदर मशीन लगाई, उसके अंदर कच्चा माल लेके आए, उसको प्रोसेस करा, किसी को बेचा। ठीक है, अब आपको नया मशीन लगाना है और आपने जिसको माल बेचा वो आपको पैसा ही नहीं दे रहा, तो ये अच्छी बात नहीं है ना बिजनेस के लिए। बिजनेस अच्छा वो जो मैं माल बेचे और मुझे प्रॉम्प्ट पेमेंट करे। कैश फ्लो बना। नहीं, कैश फ्लो में मत जाओ सर, अभी वो कंफ्यूजन होगा। मैं तो सिर्फ बेसिक चीज बता रहा हूँ। तो ये जो हमने क्या करा है, ये बैलेंस शीट है, screener.in एक वेबसाइट है, इसके अंदर ये बैलेंस शीट है, और बैलेंस शीट में हमने सिंपल चीज प्लस माइनस करके देखा कि किधर से पैसा आ रहा है और किधर को पैसा जा रहा है, और उसमें कहीं फ्रॉड तो नहीं हो रहा। सिर्फ हम वो एक स्टोरी बनाने का कोशिश कर रहे हैं अपने दिमाग में कि बिजनेस जिसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें हो क्या रहा है। ओके सर, थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, लेकिन हाँ समझ में आ सर जाएगा। मैं आपको कुछ वीडियो शेयर करूंगा बैलेंस शीट के लिए, वो यूट्यूब पे वीडियोस है, वो आप फ्री टाइम में बैठ के देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा फिर। गुरजीत जी, एक वो एसेट, एसेट एक डिफर्ड टैक्स, एक छोटा अमाउंट था डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी है। लायबिलिटी क्या वो एसेट ही रहता ना, तो वो नहीं सर, डिफर्ड टैक्स दो प्रकार के होते हैं, वन इज डिफर्ड टैक्स एसेट, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। वो क्या रिफंड तो नहीं है कहीं वो? नहीं, रिफंड एक्चुअली क्या होता है कि कंपनी दो बुक्स बनाती है, इनकम टैक्स के लिए अलग और कंपनी लॉ के हिसाब से अलग। जो डिफर्ड टैक्स होता है इसके अंदर मेजरली डेप्रिसिएशन का डिफरेंस होता है। कंपनी लॉ कहता है कि मेरा पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर का डेप्रिसिएशन 50% होगा, लेकिन इनकम टैक्स कहता है कि मेरे हिसाब से कंप्यूटर का डेप्रिसिएशन 40% है। तो ये जो डिफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी बनती है वो इसी वजह से बनती है कि कंपनी लॉ में और इनकम टैक्स लॉ में डेप्रिसिएशन के रेट का फर्क है। तो कभी कभार कंपनी मैं बता रहा हूँ, कभी कभार कंपनी लॉ के हिसाब से मैंने डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज कर लिया, तो इनकम टैक्स वाला मेरे को डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी डाल देगा कि आपको ये पैसा देना है, इस साल नहीं दिया अगले साल दो, एंड वाइस वर्सा। सो इट इज अ डिफरेंस ऑफ डेप्रिसिएशन। हेलो, तो अल्टीमेटली वो जो डिफर्ड टैक्स एसेट है वो कहीं ना कहीं तो उसको जीरो करना पड़ेगा। हाँ भाई, आज एक साल का जीरो कर दिया, अगले साल का फिर पैदा हो गया, वो चलता रहेगा जब तक धंधा चल रहा है। तो गुरजीव सर, कैन आई ऐड समथिंग? थैंक यू तो ये गुरजीव सर, कैन आई ऐड समथिंग? यस सर। तो ये बेसिकली जो आपने बोला ना, ये डिफर्ड टैक्स वाला, जो अपना जो इनकम टैक्स का जो कैलकुलेट करने का तरीका है और जो नॉर्मल तो टैक्स हम कैलकुलेट करते हैं उसका डिफरेंस है। और कभी कभी कंपनीज क्या करती हैं कि दे टेक एडवांटेज इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ टू, एंड दैट्स व्हाई इट शोज ह्यूज, एंड देन वो उसका नेगेटिव अगले 3 साल या 4 साल तक वो आते रहता है। तो इट्स अ वेरी ट्रिकी थिंग, आई थिंक। It is a tricky thing. Yes, it is a tricky thing. Yeah, so but we need to understand only thing कि कितना टैक्स बन रहा है, and sometimes it is good for the company अगर कोई केस वेस चल रहा है, but I think it's little tricky. One thing we need to understand the difference.
वही चीज मैं बोला ना कि वी हैव जस्ट स्टार्टेड ऑन अ वेरी, वी हैव जस्ट स्क्रैच द सरफेस, दिस इज जस्ट अ स्मॉल थिंग। अभी हम कहाँ डिफरेंट Yeah, टैक्स में yeah, पहुंच गए? that's अभी तो हमने मतलब पार्टी शुरू ही नहीं करी है। नहीं दिस वही मैं वाज बोल जस्ट रहा था कि आई थिंक अगर वहां जाएंगे तो अभी कंफ्यूजन ज्यादा होगा ज्यादा हो तो जाएगा। दैट इज द पॉइंट, दैट इज द पॉइंट। बिकॉज हम ना सबका होता है ना कि वी वांट मोर मोर मोर, सो वो मोर के चक्कर में हम बेसिक्स ही भूल जाएंगे। राइट 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 अप्रिशिएट सर। एक्चुअली पाजी सबको एक बार वो देखना था, रोमांसिंग द फंडामेंटल जो आपने शेयर की थी, फिर मेरे ख्याल से 50-60% सबको समझ में आ जाता, बिकॉज दैट्स हेल्पिंग मी अ वो लॉट। अगर पढ़ जो लेंगे मैंने ना, देखा ना, नहीं वो जो वो अगर वीडियो बुक आपने पढ़, भेजी थी ना, नहीं बुक नहीं, जो बस आपने उसका वीडियो भेजा था ना वो लांबा जी का, दैट वाज हाँ, वेरी हेल्पिंग। मतलब अभी आप जो समझा रहे हो वो मतलब मुझे समझ में आ रहा है, बिकॉज आई हैव सीन दैट वीडियो, दैट्स व्हाई आई दैट्स एम गुड टेलिंग सर, दैट्स यू कैन गिव द सजेशन दैट एवरीवन कैन सी दैट वीडियो। फिर आप अगर आपकी वीडियो फिर से देखेंगे तो जो उनको अभी समझ में आ रहा है 50-60% ज्यादा समझ में आएगा। राइट राइट। जस्ट अ सजेशन। हरपाल जी का कुछ क्वेश्चन बचे? हाँ सर पूछिए। हाँ जी सर, कंसोलिडेटेड देखनी है या स्टैंड अलोन देखनी है? सर कंसोलिडेटेड देखनी है। कंसोलिडेटेड मतलब क्या हुआ कि मेरी एक मेन कंपनी है, उसकी कुछ सब्सिडी है, जैसे इंडिया में कंपनी है, मान लो स्विट्जरलैंड में, न्यूयॉर्क में, तो सबका मिला के कंसोलिडेटेड। गुरजीव सर, गुड गुरजीत जी इवनिंग, सम्राट हेयर सर। ये हाँ जी। फोरेंसिक ऑडिट इसी को बोलते हैं क्या? नहीं फोरेंसिक नहीं नहीं ऑडिटिंग सर, इसी को बोलते अरे हैं नहीं नहीं सर, फोरेंसिक ऑर्डर कुछ और चीज होती है, वो ये नहीं होता। गुरजीव सर, सम्राट हेयर सर, एक क्वेश्चन था। हाँ सर। हाँ जी सर, एक्चुअली इन बिटवीन आई हैव टू लीव बिकॉज माय बॉस केम, आई एम एट वर्क, सो मे बी नो यू हैव वरी सर, आई कवर्ड विल दिस शेयर द पार्ट। रिकॉर्डिंग, आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग, 3 people are recording the video, I will Okay, share the sir. recording. Sir, I have a small query, sir. Yes sir. In between, it's about Vinti Organics. In between, their investment went from 3,000 crore to direct 10,000 crore. So when I see a company is investing such a huge amount, so how we should follow up with this? Is the investment is good, or what kind of they may be investing in some crony company to just remove the cash from the company. तो ऐसे कहाँ कैसे चेक करें सर कि इन्वेस्टमेंट सही जगह जा रहा है कि नहीं? सर थोड़ा सा मिस्टेक है आपका, विनिति का बैलेंस शीट इज 1500 करोड़, so how can they invest 3000 crore to 10,000 crore? Just see the balance sheet size, there's some mistake, you need to go to the book again. I will do that, I will do that. हेलो हाँ जी विमल सर। सर, वो आपने जो टाटा स्टील का बोला अभी के कस्टमर पेमेंट नहीं दे रहे हैं, बट आप हाँ एक्चुअली मार्केट में आप जाओ तो टाटा स्टील लेने जाओ तो ऐसा कोई आपको मीन्स डेबिट में नहीं देता है क्या? मीन्स उधारी में कोई नहीं देगा? सर हम रिटेल हैं सर। नहीं रिटेल नहीं सर, ऑटो में भी जैसे मारुति को देता है या कोई मीन्स कंपनी तो देता है, तो वो तो नंबर तो कुछ और बोल रहे हैं। itself वो अभी एक्चुअली क्या है कि स्टॉक प्राइस बढ़ रहा है, अभी सब भाव के खिलाड़ी, भाव बढ़ रहा है तो सब खुश हैं। आप रियलिटी देखो, मैंने बोला ना प्राइस को मत देखो। और हम रिटेल है, हम क्या बिल्डिंग बनाने के लिए हम 2 टेम्पू 4 टेम्पू सरिया लेंगे, पर एक्चुअल जो बड़ा मेन कस्टमर है जो इफेक्ट करता है टाटा स्टील को, वो कहाँ दे रहा है? वो अपनी अपनी शर्तों पे धंधा कर रहा है। तो नहीं, मैं वो बोलना चाहता हूँ सर कि वो टाटा स्टील उनको भी ऐसे डेबिट में नहीं देता होगा, तो वो जस्ट बैलेंस शीट एडजस्टमेंट करने के लिए उन्होंने ऐसा लिखा है, ऐसा नहीं हो सकता? सर नंबर तो नहीं बोल रहे, अगर स्टोरी के साथ नंबर मैच कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो मल्टीप्लायर आपके हाथ में। और अभी मैंने बोला ना, अभी भाव बढ़ रहा है। ओके विमल गुरजीत सर, एक मिनट, विमल भाई के क्वेश्चन का आंसर थोड़ा मैं दे सकता हूँ? हाँ जरूर विमल भाई बेसिकली आई एम आल्सो फ्रॉम स्टील इंडस्ट्री एंड आप जो बात कर रहे हो कि डेबिट में माल नहीं देते, वो दैट कम्स टू सिंस 8 to 12 months. बाकी अदरवाइज पीपल आर टेकिंग डेबिट फ्रॉम 12 months to आई थिंक अराउंड 16 months भी डेबिट चलता था पहले। I think I am talking about before 2-3 years, but now it's all about the cash market because ये कॉपर का एक बार जो लिग्नाइट कॉपर सबका भाव थोड़ा बढ़ गया, इसीलिए अब सब लोग ज्यादा वो कैश में डील कर रहे थे। और हम जो देख रहे हैं नंबर्स पुराने देख रहे हैं।
ओके हाँ ओके सर ओके। तो चलो सर ठीक है, लेट्स रैप अप। आई थिंक सबको समझ में आ गया कि हम लोग करना क्या चाह रहे थे, एंड दिस इज अ वेरी सेकंड ग्रेड मैथ है, एंड वी कैन कैलकुलेट सिंपल प्लस एंड माइनस एंड गेट टू द स्टोरी कि व्हाट द मैनेजमेंट इज थिंकिंग। जो नेक्स्ट सेशन अपन करेंगे, देन वी विल लुक एट बैलेंस शीट एंड अदर कांसेप्ट्स आल्सो। जी सर, बिफोर वी रैप अप, वन वन वेरी बेसिक क्वेश्चन। मार्केट मोजो में मैंने जैसे ऐसे एक्सप्लोर किया था, वो लोग भी यही सब एनालिसिस करते हैं क्या? बिकॉज वो लोग एनालिसिस करके दे पता गिव यू नहीं लाइक ग्रीन बटन, ब्लू बटन, येलो बटन, सर, दैट गुड आई एम फॉर नॉट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, गुड फॉर लॉन्ग टर्म। sir, I am not giving you a button. I am not focusing on price. I am giving you insight. बटन आपको खुद को या बनाना है, मैं तो आपको सुई धागा दे रहा हूँ। करेक्ट। हाँ, तो नहीं, मैं यही समझना चाह रहा था, वो लोग ये सेम एनालिसिस करते हैं या उनका मतलब कुछ और रहता होगा? सर मुझे एनालिस्ट से मतलब नहीं, मुझे ये कह रहा हूँ कि कंपनी मैनेजमेंट क्या कर रही है। अगर मैनेजमेंट चोर है तो फिर मेरे को कोई मतलब नहीं, चाहे मार्केट मोजो हो या गोल्डमैन सैक्स हो। तो गुरजीत जी से सजेशन लेके डाल देते हैं उसमें वो लोग। नहीं सर, आई एम नॉट, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं। चलो सर, लेट्स रैप अप। अभी 1.5 एक घंटा हो गया, लास्ट 1 घंटे क्वेश्चन का सर। सेशन था। आई आल्सो टू लीव। गुरजीत सर, एक लास्ट क्वेश्चन था सर, सॉरी सर आपको हाँ डिस्टर्ब कर रहा हूँ। ये बोलिए एक्चुअली सर, बोलिए। ये इन्वेस्टमेंट का बात थोड़ा सा, ये मैं सेल में भी देख रहा हूँ सर, 61 करोड़ टू डायरेक्टली 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो गया सर। तो ऐसे हाई इन्वेस्टमेंट जब चेंज हो जाता है तो क्या सर करना चाहिए सर? एनुअल रिपोर्ट में देखो सर, वो क्या कर रहा है, मेरे यस को नहीं सर, पता है। एनुअल रिपोर्ट में देखो सर। यस सर। चल, ओके एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर।